जो ये वीडियो है ना, आप अगर पूरा देखो, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। इसमें मैंने जो लेवल का पासवर्ड गेन करा है वो करा है लेवल 26 का एंड 27 का। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, तो आपको पता लगेगा कि कैसे पहले हमने उसको जो फाइल है उसके वो ओपन करने की कोशिश करी। बाय एनी चांस वो ओपन तो हो रही है, बट इसमें जो एक SSH की है वो पूरी रिटर्न थी। ट्रिक्स मुझे पता थे, सब कुछ मुझे पता था पहले से। प्रॉब्लम उसमें ये फंसी कि ये तो पता था करना क्या है, बट ये नहीं पता कि कैसे करना है। सो आई सॉ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस। मैं सर्वर के अंदर ही सर्वर के फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मतलब एक्सेस कर पा रहा था बट सर्वर के फाइल को सर्वर के अंदर ही मैं उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जीक्यूट होने से पहले मेरी कमांड जो है रुक जाती है। वहाँ पे नीचे अगर आप देखो एग्जिट 0 का है, तो यानी कि जो एग्जिट 0 है उससे पहले ही मेरे को वाली कमांड जो है उसको प्रॉपर वहीं पर उसको मुझे फाइल को डिकोड करना है। अब हुआ क्या कि आई सॉ लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल, सब कुछ देखा मैंने कि सबने बताया तो है करना है, ये करना है, सबने बता रखा, लेकिन ये नहीं बताया किसी ने करना कैसे है। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। इसको मैंने जो सॉल्व किया कट टू कट दिखाया कि कैसे आप लोग इस फाइल को कैसे अपने जो है पहले कहाँ कॉपी करनी है, फिर कहाँ से कहाँ पे जाकर उसको पेस्ट करना है, उसके बाद कैसे परमिशन चेंज करनी है, एंड देन कैसे आप वाली जो फाइल है रन कर सकते हो और पासवर्ड जो है ले सकते हो। अब ये भी एक और ट्रिकी पार्ट है। पासवर्ड तो आप ले लो 26 का, बट 26 का जो पासवर्ड अगर आप सेम सर्वर से एग्जिट करके जाओगे ना, नहीं रन करने का। आपने करा एग्जिट, आपने सोचा कि लो भाई बैंडिट 26 में पासवर्ड मिल गया तो लॉगिन करके देख लेते हैं, उसमें क्या ही जाता है। मैंने अभी सेम वे ट्राई करा, ऑफ कोर्स आप भी सब सेम वे से ट्राई करते, वो भी नहीं काम करा। वहाँ भी एक और दिक्कत क्या कि बैंडिट 26 का पासवर्ड जो है वो सर्वर के मिल तो गया लेकिन चल नहीं रहा। अब बैंडिट 27 का ही पासवर्ड चाहिए। सो सेम वे ये वाली वीडियो देखोगे समझ पाओगे कैसे हमने बैंडिट 26 का पासवर्ड रिकवर करा, देन कैसे हमने बैंडिट 27 का पासवर्ड रिकवर करके देन हमने लॉगिन करा बैंडिट 27 के अंदर। ये वीडियो कोई नहीं बता, ये चीज़ भाई कोई नहीं बताएगा, लिटरली कह रहा हूँ। कोई किसी ने चीज़ कट टू कट यूट्यूब पे बताई नहीं है। स्टडी करी तो पता लगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, जो कि आप वीडियो में देखोगे इजीली क्विकली। आप 7 मिनट की वीडियो में सब कुछ देख पाओगे, समझ जाओगे पूरा इसका जो पूरा इसका एल्गोरिथम है वो समझ पाओगे कि इसका प्रोसेस क्या एग्जैक्टली, कि कैसे कैसे करके हम पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। सो सीरियस वीडियो एक बार आप देखो, आपको पता चलेगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक जो भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत जरूरत सब्सक्राइब करने की, अभी सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी लगता है सुझाव है दे सकते हो। आई एम ओपन फॉर दैट, ट्रस्ट मी। जो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार आप ये वीडियो पूरी देखिए, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। Let's start the video. It says login into Bandit 26 from Bandit 25 should be fairly easy. The shell for used Bandit 26 is not /bin/bash but something else. Find out what it is, how it works and how to break out of it. There is a note as well. If you are a Windows user and typically use PowerShell to SSH into Bandit, PowerShell is known to cause issue with the intended solution to this level. You should use command prompt instead. We have to just log in into Bandit 25, then recover the password. This is not, this shell is not for Bandit 26 user. Let me open my terminal, enter the password here, wait for a few seconds. Okay, all right, I'm into Bandit 25 lab. There is a key, Bandit 26.ssh key. Let me try to open this key. Okay, so this is it. Let me try to find out how we can solve this lab. Writing like this, ssh bandit 26 at localhost -i, then bandit. I'm hitting just enter. Yes, I want. All right, just permission denied localhost. SSH bandit is the key. They're wanting to host localhost. It can't be stabilized. Just the permission is denied. Let me try one more time. Let me try to flip a few things here. SSHI bandit key 26 at the rate localhost. Let me try it out this way. Still the same way. The issue I'm facing here is, this supposed to be give us a key, which is not. All right, let me do one thing. Let me try to cat etc password. A lot of things related to different users. So we have to find out the bandit 26. So this is the bandit 26. So it is okay. Type here, then grape. So this is the user. Okay, let me try this once as well. Let me try to open this. This is the bin bash. This is the sh command there is running, and this is the terminal. This is the export terminal is Linux. This is executing this file, and we have to recover the password before the entire command exit. So no one is going to tell you. This is the trick basically. First we have to copy the entire command on the local directory. Right now I'm the server of as you can see, who am I? I'm on the server bandit 25. There is a time to do some magic. What I am going to do is copying this entire key. Okay, so let me open my terminal. Open terminal locally. I'm at the home directory basically. So nano, I'm just keeping the file name exact same, bandit26.ssh key. Paste this key. Okay, here, pasting the key here. Saving, exiting. Okay, so ls -l bandit key. Let me see the permission. Okay, so I have to do this read permission only. Chmod, I'm using 400. This 400 code is for read only permission. L bandit. So now it should be read only. No one can write this file now. So I have to just log in into SSH now, SSH 26 by using this key. No one is going to tell you about this.
I'm pretty sure. SSH, I'm just targeting my key here and giving the port number, which is 2220. That terminal, Bandit 26 at the rate. I'm just giving this server name. Let me hit the enter. I'm just waiting for one thing only. So this is the thing I'm not getting previously. If you can see in this tab now, let me show you. So in this tab, if you can see, if I'm still be able to log in here now, what I want to show you here, like this is the Bandit 26 I'm getting here. In this terminal, I'm not be able to get this. SSH, same thing I'm doing. Bandit key, port number 2220, terminal, of course, then Bandit at localhost. I'm just doing localhost twice, so because of I'm already in a server. See, from here I'm getting this screen here, not more than that, and it asks me for the password only. So because I don't have any password or such thing, so if I put yes here, so it will give me an error, permission denied, public key password. Now this is the very tricky part. Watch carefully. Just minimize this thing so that I can be able to read, or I can just be able to find the more command here like this. See, this is 24. I'm just hit enter one more time. 48 and 50. V colon. Let me type ls. I'm just expanding this stuff here. Hitting enter one more time. V, then colon again. Set shell is equal to bin bash. If nothing comes up, again I'm doing shell. Okay, so I'm into now Bandit 26. Watch carefully. I'm into Bandit 26 now directly, but I don't have password. Password doesn't require to jump into the Bandit 26 right now because we do have a SSH key. I use that SSH key to jump into, or you can say to log in into Bandit 26 here. I'm doing just ls because I have to find the directory. Nothing comes up. ls minus la. Where's the password? Still not there. What I'm doing is, okay, so let me do one thing for you. ls a/etc bandit pass. This is the all the bandit directories. So all the folders in the bandit pass directory. So what I have to do is I have to just read this file out. Bandit 26. So this is the password. So for the next lab, it says good job getting a shell. Now hurry and grab the password for Bandit 27. For Bandit 27, let me do ls. So I'm just doing bandit cat. I'm just try to read the password etc bandit pass and bandit 27. So bingo, this is the password for the next level. Okay, let me open another terminal here. 27@bandit.labs.org. Alright, so this is how you can recover the password of level 26, and immediately you have to recover, you should be recover the password 27 as well. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Stay tuned, stay connected, stay safe. Bye bye.